Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and safe. Today is the first class of differential equation in online session. Before going ahead, let me explain you the summary of the studied material. Initially, we have studied the type of differential equations. In differential equations, we studied the order and degree of differential equations, types of first order differential equation. In these types, we have studied linear differential equation, separable differential equation, homogeneous differential equation, exact. Now let me explain all these points one by one. Types of differential equation. There are basically two types of differential equation. One of them is ordinary differential equation. ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे कैलकुलस में आपके पास एक कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है एंड partial differential equations, it is the same concept of partial derivatives जिसमें number of independent variables एक से ज़्यादा होती हैं. Definition is ordinary differential equations. If an equation contains only ordinary derivatives of one or more variables with respect to a single independent variable, it is said to be an ordinary differential equation. That means, just like in this example, x is the independent variable. ठीक है, इसमें एक और बात जो लिखी हुई है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं दे कुड बी मोर देन वन और मोर. जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल जो देखिए इसमें वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वो सिर्फ y है. इट कुड बी मोर देन वन बट all the dependent variable must be depending on x. Partial derivatives. Partial differential equations. An equation involving partial derivatives of one or more dependent variables एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं with respect to two or more independent variables और इस केस में independent variables भी एक से ज़्यादा होंगे is called partial differential equation. In simple words, any differential equation which includes partial derivatives is called partial differential equation, or any differential equation which includes ordinary derivatives is called ordinary differential equation. The order of a differential equation is the order of highest derivative in the equation, just like d square y by dx square plus 2b dy by dx whole cube plus y is equals to 0. This is the highest derivative in the equation. This is of the second order. This derivative is of the first order. The differential equation given is of second order ordinary differential equation. The degree of differential equation is the greatest exponent of the highest order derivative that appears in the equation. That means जो highest order होगा उसकी जो maximum power होगी that will be called as the degree. अब इन दोनों को मैं अगर समराइज करूं तो जो ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव होता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं और जो ग्रेटेस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये जो टाइप हैं ये सारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस थी. इनिशियली वी स्टडीड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, exact differential equation and linear differential equation. Now let us go into the bit review of all these differential equation one by one. Now let us start with the concept of separable first order differential equation. From the name it is very clear separable differential equation वो differential equations होंगी इसके अंदर हम आसानी से अपने variables को separate कर सकें, उन्हें separable differential equation कहते हैं. For example, if we have this as a differential equation, we can split the function of x and the function of y with their respective differentials. These kind of differential equations are called separable differential equations. Just like here we have done, this was the method. आप y के function को अलग कर लें, x के function को अलग कर लें. कि whenever any function is in a denominator, that function must not be equal to 0 if you are going to find a solution of that equation.
After that, we will integrate this function with respect to y and integrate h of x with respect to x. We will get the solution with the constant of integration c. If the question is given with the initial value problem, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम यूज करेंगे और इस c को भी कैलकुलेट करेंगे. दिस वाज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन. Now come to homogeneous differential equation. If any differential equation of the type where this is the function of x and y, it could be written in the form mxy dx plus nxy dy equals to 0, is said to be homogeneous if m and n are homogeneous functions. m और n homogeneous functions होंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. होमोजीनियस फंक्शन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि if you replace x by tx and y by ty तो t power n properly कॉमन आ जाए. सेम इज द केस अगर आप n के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन पुट करें, if we could take t power n as common, then these are called homogeneous functions. What was the method? Now let me explain the method how to solve homogeneous differential equations. इसको जब हम लोगों ने solve किया था, what we did was just replaced y by ux और x by v by, हम वेरिएबल्स को एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. Then we will proceed by the method of separable differential equations. Exact first order differential equation. First, ये हमारे पास एक differential equation है. This equation is an exact differential equation if the following condition is satisfied. If we take the derivative of m with respect to y and if we take the derivative of n with respect to x, और अगर इन दोनों के derivative एक दूसरे के equal आ जाते हैं, then we say that the differential equation is of exact type. This condition of exactness ensures the existence of a function f such that partial f by partial y is equals to n and partial f by partial x is equals to m. ये टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से टर्म्स आई हैं जो हम लोगों ने क्लास में ड्राइव भी की थी. मेथड ऑफ सॉल्यूशन. एग्जैक्ट इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है? इनिशियली check that the equation is exact by verifying the condition. सबसे पहले हमारा काम यह है कि वेरीफाई करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट टाइप की है या नहीं. If the equation is of exact type, then we have to write it as partial f by partial x is equals to m, partial f by partial y is equals to n. हमारा टारगेट क्या है? और टारगेट इज टू कैलकुलेट f. आप इस इक्वेशन से भी अपना काम प्रोसीड कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी काम प्रोसीड कर सकते हैं. Let me start by using this equation partial f by partial x is equals to m. First, I have to integrate with respect to this x. मेरा टारगेट है f को कैलकुलेट करना. पहले ये डिफरेंशियल खत्म होगा. I have to integrate with respect to x. तो हम लोग इस इक्वेशन पे आ जाएंगे. फिर दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जब हम एक मल्टीवैल्यूड फंक्शन को x से इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा दैट कुड बी अ फंक्शन ऑफ y, इट कुड बी अ कांस्टेंट, इट कुड बी अ फंक्शन ऑफ y, ये कुछ भी हो सकता है. Now we have to calculate theta of y. For that, we use the concept of comparison. Partial f by partial y, take the derivative of f with respect to y. The function theta is an arbitrary function of y, integration of with respect to x, y being constant. अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. डेरिवेटिव लेने के बाद हम इसे कंपेयर कर लेंगे पार्शियल f by पार्शियल y के साथ और by comparing we can find this theta of y. Here we took the derivative partial f by partial y. Comparison is done with n of xy and theta prime of y will be an equation. Theta prime of y will be the value given. Now we need theta of y. This is theta prime of y. तो इस prime को remove करने के लिए we have to integrate
this theta prime of y with respect to y. Because this is a function of y, we have to integrate with respect to y. Then put the value of theta y in f of xy. Solution will be complete. All the solutions are given by the implicit equations. Solution must be in the form of implicit equation. So put f of xy equals to c. Next, linear first order differential equation. फर्स्ट सेशनल के साथ ही हम लोगों ने जो इक्वेशन स्टडी की थी दैट वाज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax dy by dx plus bxy equals to c of x is a linear differential equation of first order. The equation can be written in the following form. This is the form जिसको यूज करके हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं. सो इस फॉर्म को ज्यादा यूज करेंगे. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होगी. It will not appear in the multiple form where p of x and q of x are continuous functions. अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया. इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. सबसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम y के कोफिशिएंट से फाइंड करते हैं. फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. u of x is equals to, this is the way how we find the integrating factor. Write down the general solution and where this is the general solution of that equation. u of x is the integrating factor. q of x is this term. Integrate with respect to x plus c. जब हमने क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन को किया था तो हमने ये कहा था कि इट कैन बी रिटन एज u x y dy is equals to qx multiply by u integral of dx. जब हमने क्लास में इसे किया था तो हमने ये कहा था कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसे इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीप्लाई करें और इट कुड बी रिटन इन दिस फॉर्म. जब हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो फाइनली आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है. सेम एज इन द लास्ट टाइप ऑफ इक्वेशन. अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हुई, we will use that initial conditions to find the value of c. Once the value of c is found, plug in the calculated value to write the particular solution of the problem. आज की जो बेसिक टाइप है जो आप लोगों ने पहले स्टडी नहीं की थी दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन. ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन की तरह की इक्वेशन होती है और दीज आर द इक्वेशन व्हिच कुड बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. A differential equation that can be written in the form, this is the form dy by dx plus bxy equals to q of x y power n is called Bernoullis equation. This is a non-linear differential equation और इसकी non-linearity ये वाली term generate करती है because of the value n. If this n is greater than 1. Bernoullis equation की चंद conditions होती हैं. First we have to trace this n. ये जो power होती है हमने इसे सबसे पहले tackle करना है. We have to trace this n. If n is not equals to 0 or 1, divide by y power n. If this n is not equals to 0 or 1, तो हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को y power n से डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद we will substitute this thing और ये जो टर्म है ये यहाँ पर जनरेट होती है. यहाँ पर जो टर्म बनेगी इसको हम v का नाम दे देंगे. Through easy differentiation, find the new equation by this substitution. After substituting this v, the differential equation will be of this type. अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल v हो चुका है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है. अब ये इक्वेशन v और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें कंप्लीट इक्वेशन को, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वही पैटर्न था
कि जो फर्स्ट पावर वाली टर्म है, यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से इंटीग्रेट करके हम सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब हम क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू 0 को भी इंक्लूड करेंगे। If you have initial value problem, then use the initial conditions to find the particular solution. अभी सारे इसी मेथड को फॉलो करते हैं और अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहली बात कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये आपने सबसे पहले ट्रेस आउट करनी है। इफ इट इज अ सेपरेबल इक्वेशन तो हम सेपरेबल के मेथड से भी कर सकते हैं। इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन हम लीनियर के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर ये किसी भी टाइप की इक्वेशन है हम जिस मर्जी मेथड से अटेम्प्ट करें। Here, the value of y is more than 1, so it is of Bernoulli's type. अब क्या करेंगे? First of all, we arrange it as in the method explained. Next step is we traced n, that is equals to 3. This is the value of n. P of x minus 1, q of x, that will be 1. Divide the whole equation with respect to this y power 3. This will be the new form of the equation. फिर मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर जो फंक्शन जनरेट होगा हम उसे v लेट कर लेंगे। दिस इज v, दिस इज बेसिकली y पावर 1 minus n, 1 minus n, where n is 3, so 1 minus n, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, एंड दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v। इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन जिसके अंदर ये p of x होगा, दिस विल बी द q of x। जो लीनियर इक्वेशन जनरेट हुई है हम उसको लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, और लीनियर इक्वेशन के मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो मेथड वाज फर्स्ट फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x से फाइंड आउट करते थे। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्रॉपर प्रोसीड करते हैं जो भी हमारा मेथड था उस मेथड के अकॉर्डिंगली। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ v with the constant, where this one is u, this one is q, and this one is also u. Integrate करेंगे, we will get the solution in terms of v, where the solution is having a constant of integration. Question was in terms of y, so we have to end our question in the form of y. Back substitution करेंगे, जो हम लोगों ने select किया था, जो substitute किया था वो ये था v is equals to y square. बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन ऊपर गिवन है वो y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। Since n is greater than 1, we include y equals to 0 in the solution. Hence, all solutions are 0 and distinct. अगर क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस गिवन होती तो हम इस c को भी ट्रेस करते और यहाँ सब्स्टिट्यूट करते, और अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो this will be the final solution. Now let us take one more example related to Bernoullis equation. This is basically p of x of Bernoullis equation. This is q of x of Bernoullis equation, where 2 represents the n. So the value of n is equals to 2. P of x is 1 by x. Q of x is x. Method was divide the whole equation by y square. Y square से divide करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो term बनेगी that will be 1 over y. उसे आप v या w के इक्वल सपोज कर लो। सपोज करने के बाद आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस वक्त y और x की फॉर्म में है इसे ट्रांसफर कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स w एंड x।
W और X में ट्रांसफर करने के बाद ये जो इक्वेशन जनरेट हुई है, दिस इज अ सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. Linear differential equation. Now we will solve this equation by following the method of linear differential equation. Linear differential equation का method ये था कि first we will find the integrating factor by using this p of x, and the integrating factor is x power minus 1, could be written as 1 by x. The representation d by dx, this is u, the integrating factor, this is the dependent variable, और राइट साइड पे जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी वो सिंपल 1 की इक्विवेलेंट होगी. बाय अप्लाइंग 1 बाय x, x कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट -1. इंटीग्रेट करें, वी विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन. नाउ द सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ w, बट द क्वेश्चन वाज इन द फॉर्म ऑफ y. सो बाय यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन w को y में कन्वर्ट कर देंगे. दिस इज द बैक सब्स्टिट्यूशन. We obtain y equals to 1 by w. This is the final solution. For n greater than 0, the trivial solution y equals to 0 is a solution of the given equation. In this example, y equals 0 is a singular solution of the given equation. Let us take one more example related to Bernoullis equation. A bit complicated equation. The value of n is 1 by 2, where p of x is x by 1 minus x square and q of x is x for the case of Bernoullis equation. पूरी इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर दें. सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 1/2 अपीयर होगा. वी विल सब्स्टिट्यूट 1/2 एज w और v और u, whatever it is. We will substitute v equals to y power 1/2. Just like here, 1/2 से डिवाइड करेंगे. We will get y power 1/2 equals to v. After this substitution, the differential equation could be converted in terms of v. तो ये जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आएगी, दिस इज अ सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वी हैव टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर में टेक दिस p of x, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज द इंटीग्रल. आई होप सो कि ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे. इन केस प्रॉब्लम आए तो ऑनलाइन सेशंस में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे. Exponents -1/4 natural log of 1 minus x square is equals to 1 minus x square multiplying 3. अब हम जो इक्वेशन 3 आई है इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और लीनियर इक्वेशन के मेथड पे प्रोसीड करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुड बी रिटन एज दिस एंड दिस, where this is u and this v is the dependent variable. u जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसका मतलब ये होगा कि this is an integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करें. अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, दैट इज c. बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू रिप्लेस दिस v back to y, then that will be the final solution of the differential equation. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन की. बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होती है? लेट मी गिव यू द समरी. यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं. आप इनको देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें. मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात को रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ. बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन. बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो
नॉन लिनियरिटी जनरेट होती है वो इस टर्म की वजह से होती है। दिस पावर विल बी नेम्ड एज n। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इस वेरिएबल को जो नॉन लीनियर टर्म जनरेट हुई है इस सारी टर्म इसमें से y वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन से। यहाँ पर सिर्फ जी q ऑफ x जनरेट करना है, यहाँ पर जस्ट q ऑफ x रहने देते हैं। डिवीजन करने के बाद यहाँ पर जो टर्म y की जनरेट होगी वी विल सब्स्टिट्यूट दैट टर्म बाय v और एनी न्यू वेरिएबल। ये जो न्यू वेरिएबल होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और वो जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ v। और वो जो v की टर्म में सॉल्यूशन आता है फिर बैक सब्स्टिट्यूशन में हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल में वापस आ जाते हैं y में। आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल वेरिएबल y। ये बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन का प्रोसीजर था। दिस is called the initial value problem. This is basically called the initial condition। और जिस क्वेश्चन के अंदर ये इनिशियल कंडीशन गिवन होती है वहां से हम जिस क्वेश्चन के अंदर ये इनिशियल कंडीशंस गिवन होती है उन उस क्वेश्चन में हम लोग c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर होता है उसे भी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज। और वैल्यूज क्या होती हैं? दिस इज y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है put x equals to 1 and y equals to 0। Same is the case in this question। You have to substitute x equals to 1, this is the value of x and this is the value of y। ये y की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है। सो इस पैटर्न को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं y equals to 1 and x equals to 1 और x equals to 1 and y equals to 0। इस क्वेश्चन के अंदर c अपीयर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में भी आप c को ट्रेस कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा मेथड था बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का और ये चंद क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो हम लोग इन्हें डिस्कस कर लेंगे।